हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी एंड मोर एंड मैं हूं मयूरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज ये वाला ग्लैम मॉडल काइंड ऑफ लुक क्रिएट किया है। तो मैंने ये वाला लुक स्पेंसर पेंटेड बाय स्पेंसर, उनका चैनल है, तो उनसे ही इंस्पायर्ड होके मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है। तो मैं उनका वीडियो लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो मैंने बस ट्राई किया है कि मैं उनके जैसा थोड़ा सा भी कर पाऊं, और उन्होंने जो जो प्रोडक्ट यूज किया है मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली वो सब प्रोडक्ट्स नहीं है। तो मैंने बस उनका टेक्निक्स एंड मेथड्स, टिप एंड ट्रिक्स ये सभी फॉलो किया है एंड फिर ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने सारे मेकअप लवर्स से। एंड जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। To start off, I'm using the Dewy Skin Cream from Tatcha, and I put this on the back of my hand, I warm it up with the Beauty Blender, and then I apply it to the skin. So स्पेंसर ने मॉइस्चराइजर को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया फेस में, तो मैंने अभी ऐसा कभी नहीं किया है। तो आज बस हम उनको फॉलो करने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। Of course, I bring it down the neck and the chest and everywhere and anywhere that we're going to be applying foundation or any other products. I leave this on for about 5 to 10 minutes before I put any other products on top. So I'm done with my moisturizer. Yeah. Next up, I'm using the Anastasia Beverly Hills Cream Contour Kit. This is in the deep shade. I'm mixing together a couple of those contour colors to create the perfect contour shade for our model. Okay, so next स्पेंसर ने कोई क्रीम कॉन्टोर यूज किया है। जनरली क्रीम कॉन्टोर यूज नहीं करती, पाउडर ही यूज करती हूँ। तो मेरे पास ये मेकअप स्टूडियो का एक पैलेट है, मैं इससे करूँगी। नहीं तो मेरे पास एक डार्क शेड का फाउंडेशन है, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। तो चलिए करते हैं। By using a brush that isn't too dense like the one I'm using, it prevents me from getting too harsh of lines with the product. तो स्पेंसर ने ब्रश के साथ अप्लाई किया था, तो मेरे पास ये वाला ब्रश है, तो मैं इसे ही करने वाली हूँ। And I'm going to be placing this product along the perimeter of the face, including the hollows of the cheeks, underneath the jawline, even underneath the lip, and of course the sides of the nose to contour the nose. To color correct, I'm going to use that peachy coral cream in the same Anastasia Beverly Hills palette. So अभी हम यूज करने वाले क्रीम करेक्टर, ऑरेंज क्रीम करेक्टर। तो मैं अपने मेकअप स्टूडियो पैलेट से ये वाला शेड यूज करूंगी। तो उन्होंने भी फिंगर से किया, तो मैं भी वही करने वाली हूँ। Deeper the skin tone and the brighter you want to go with your highlight, the warmer you're going to want your color corrector to be. And this will prevent there from being any gray undertones in your makeup. Now let's see वो क्या करते हैं। I want to move on into foundation. Today I'm using the CoverGirl True Blend Matte Made Foundation. तो अभी उन्होंने एक लिक्विड फाउंडेशन यूज किया है, तो मैं भी यूज करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये ट्रायल पैक था मैक का, तो ये बहुत दिनों से मैंने यूज नहीं किया, तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा यही यूज कर लेते हैं। तो मैं यूज करूँगी NC35, दिस वन। Now you see I'm applying this with the large fluffy face brush, and this will just allow for a really diffused application so everything remains soft and I can build this up in areas that I want it to be built up in. तो मैं ये वाले ब्रश से ही अप्लाई करूँगी। And you can probably also see that I'm not being the most precise with the application so far. Right now my goal is just to get the product on the face, and then we'll work out the details as we progress. To conceal, I'm using the Born This Way multi-use sculpting concealers. I'm using two different shades. They're the shades Vanilla and Butterscotch. So for the concealer, I'm gonna use two concealer like he did. So I'm using the Dermacol concealer plus foundation, and then this is the Elegant Pro HD concealer in the shade creamy beige, and I apply it directly underneath the eyes, and I fan it outwards towards the perimeter of her face. If you're not really too sure how far up to bring your concealer,
I recommend just following your bottom lash line directly outwards, and that's an almost guarantee of a perfect placement. I'll also be applying this concealer to the chin, down the nose, and the center of the forehead. So to blend this concealer, I'm using this Damn Beauty sponge, like he did. To set the under eyes, I'm using the Ben Nye Banana powder. It's a setting powder that I really love. I've been using for years now. मेरे पास है क्रायलॉन का TL4 ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो एक येलो अंडरटोन का पाउडर है, तो मैं इसे ही अप्लाई करने वाली हूँ। और उन्होंने जैसे पफ से किया है तो मैं भी पफ से ही करने वाली हूँ, ये वाला पफ। So for the face powder, I'm using the Huda Beauty Easy Bake Powder in the shade Blondie. And what I'm going to do is I'm going to apply this powder with a large fluffy face brush. मैं यही वाला सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करने वाली हूँ फुल फेस के लिए। तो उन्होंने भी एक फ्लफी ब्रश लिया है, तो मैं भी ये वाला ब्रश यूज करने वाली हूँ। And then once it's on the skin, I'm going to go in with a powder puff and really press that powder into the skin. अभी मैं भी करने वाली हूँ पफ से इसको प्रेस। That's a little trick of mine. It's what gives me that really flawless airbrushed look to the skin. Especially for video, you'll see that any of the texture that we had on the forehead or on the cheeks will completely disappear. So we are done. With this powder contour kit by Anastasia Beverly Hills, I'm going to further emphasize all the areas that we had previously placed the cream contour in. तो अभी उन्होंने एक पाउडर कॉन्टोर यूज किया है, तो मेरे पास भी एक पाउडर कॉन्टोर है जो LA Girl का है कॉन्टोर किट, तो मैं यही वाला यूज करने वाली हूँ। This is the medium to deep powder contour kit. And as I said, I'm just taking this along the perimeter of the face and anywhere where we had applied the cream contour previously. This is just to bring that definition back. Sometimes we can lose that structure and that definition when we set the face with the setting powder. So this is just bringing everything back to life. I'm taking those same shades from the powder contour palette and I'm putting it right up underneath the eyebrows. And this will give me that really structured model-esque look that I love. And then of course I take it down the sides of the nose and underneath the lip just to make that lower lip a little bit more plump. Okay, so अब हम भी वैसे ही करने वाले हैं। मैं वही वाला कॉन्टोर किट यूज करने वाली हूँ। आईज के इनर कॉर्नर से लेके हमें नोज को कॉन्टोर करना है। इनर आई को और भी थोड़ा इंटेंसिफाई करना है इससे, ताकि हमें वो चीजल्ड मॉडल वाला लुक मिले। So next क्या करते हैं? Going back in with our Ben Nye Banana powder, I'm taking a powder puff and just pinching it at the end to create a more precise application. And I'm beginning to bake underneath the eyes. तो हम अभी फिर से बेक करने वाले हैं। स्पेंसर बोल रहे बेक करने के लिए, तो हम बेक करेंगे। The thumb from earlier, I'm just following that lash line up and outwards. I know I've said it before. I'm going to apply this Laneige Lip Sleeping Mask to her lips, so that way later on when we apply lipstick, they're moisturized. तो मेरे पास तो सेम लिप ग्लॉस या फिर लिप बाम नहीं है, तो मैं अपना सस्ता मेबलिन का ही लिप बाम लगाने वाली हूँ। And then I'm going to start the brow process. I'm using this Brow Wiz in the shade Soft Brown by Anastasia Beverly Hills. तो मेरे पास मेबलिन का एक आईब्रो पेंसिल है। जैसे आप लोगों को पता है, मैं जनरली आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, पोमेड टाइप का कुछ यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये वाला था, तो मैं इसे ही करूँगी। And I'm slowly going to start building up this brow to get it to the thickness and density that I want it to be at. सो नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं।
Using the Life Liner eyeliner by Huda Beauty, and we're taking the pencil side of this liner and placing it right in the upper lid lash line and winging it out slightly. तो मैं कलर बार का काजल पेंसिल यूज करने वाली हूँ. You'll see I'm not being too precise with it because we're going to end up blending this out anyways, but this is just the backdrop per se for the eyeshadows that are to follow. I'm bringing this halfway up into the crease so that way we can add some contrast to the lid and the crease itself so we can have that illusion that there's a large open eye. It's going to look really beautiful when I'm done. With an eyeshadow brush, I'm going to start buffing out that liner and smoking it outwards. And again, we're going on top of this with eyeshadows, so this doesn't really have to be absolutely perfect. So I'm done with my this eye. तो अभी देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है. Speaking of eyeshadow, when I first thought of a blue, bold eye look, I figured what better palette to use than the Blue Blood eyeshadow palette by Jeffree Star Cosmetics. And I'm only going to end up using 3 shadows for this complete look. I'm starting out with the shade Undertaker, which is a really deep navy blue, and I'm placing that on top of wherever I place the black liner. तो मैं बीबेला का ये वाला पैलेट यूज करने वाली हूँ. एंड इस पैलेट से ये वाला जो शेड है ये नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू शेड है, तो मैं यही यूज करूँगी अभी. So I pack on that eyeshadow with a flat blending brush and softly start diffusing the edges. The second shade that we're going to use from the palette that we're going to use for the center of the lid is called Deceased, and it's this really rich blue that has a slight metallic finish, which I think is really nice because that right in the center of the lid is going to catch light, which is going to make the contrast even more dramatic. मैं जो शेड यूज करने वाली हूँ वैसा ही टाइप का ये वाला शेड जुवियस के पैलेट से. Once you have those edges diffused, I'm going to take our Huda Beauty pencil again and run that through the waterline. Once I'm done with that, I'm going to take it back and reline the upper lid as well. So मैं वही कलर बार का काजल पेंसिल यूज करूंगी. तो नेक्स्ट क्या करते हैं देखते हैं. With another flat blending brush, I'm going to dip back into the shade Deceased, and I'm going to slowly start smoking out the bottom lash line. तो अभी उन्होंने सेम वही डार्क नेवी ब्लू शेड लिया है एंड फिर उन्होंने अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट किया है, तो हम भी वैसे ही करने वाले हैं. The last eyeshadow we'll be using is the shade Priceless, and with a detailed blending brush, I'm going to place that right at the brow bone, and this will really help make it pop. तो मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है जुवियस का पैलेट एंड फिर इस पैलेट से मैंने ये वाला शेड लिया है. And with the other side of the Huda Beauty eyeliner, there is a liquid pen, and I'm using that just to trace the upper waterline. तो अभी उन्होंने एक पेन लाइनर का इस्तेमाल किया है, तो मेरे पास है मेबलिन न्यूयॉर्क ये वाला, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ अपने अपर लाइन में ताकि जो हमारा लाइनर है थोड़ा सा पॉप करे. For mascara today, I am using the Better Than Sex mascara by Too Faced, and I'm coating both the top and bottom lashes with this. So for the mascara, I have the MAC mascara. For lashes, I am using the Exotic Style Lash
from Salon Perfect. And as you can see here, as I'm waiting for the lash glue to dry, I'm twisting the lash in a circular motion. So that way when I place it on the lid, the edges of the lash really form to the eyelid. So for the lashes, I have this lashes. तो मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ. So guys, I'm done with my eyelashes. So next क्या करते हैं वो देखते हैं. So here I'm dipping into the lighter shades in my powder contour palette and I'm wiping off the excess baking powder that we have. तो मैं Maybelline का ये Fit Me फेस पाउडर है, इसे ही मैं वाइप ऑफ करने वाली हूँ. I'm loving this look. अब नेक्स्ट तो उन्होंने अपने कॉन्टोर को थोड़ा सा और शार्प बनाने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज किया है. तो मैं सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर लूंगी क्रायलॉन का. So now next. Now I'm starting the lips. So get this, for lip liner, I'm actually going back in with that cream contour color that we used from the Anastasia Beverly Hills cream contour kit. So it's the same shade that we had used for the face when we were contouring it with the creams. हमें वही contour shade लेना है, liquid contour shade, and उसे अपना lips outline करना है, draw करना है. Interesting. I'm really focusing this product on the outer edges of the lip while keeping the center bare for the lipstick. Okay, so I'm done here. अब देखते हैं next क्या होता है. Which is Kylie Cosmetics liquid lipstick in the shade Exposed. I'm placing this directly in the center while diffusing it outwards. So अभी उन्होंने एक nude lipstick apply किया है, तो lipstick के लिए मैं use करूँगी Maybelline का ये वाला lipstick, Maybelline Superstay Matte Ink. I think it's quite similar. मेरे पास उतना light lipstick नहीं है, light nude lipstick. तो I think it's fine. So I'm going to be extra and add a gloss. The gloss I'm using is from KKW Beauty in the shade Proud of You. मैं उतना ज़्यादा gloss use नहीं करती, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं बस इस lip balm से ही काम चला लूँगी. तो बस हमें क्या करना है, इस lip balm के साथ अपना जो lipstick है उसको mix करना है. And then हमारा DIY lip gloss ready है. I'm loving this. Blush, I'm going in with my Urban Decay Cosmetics Stay Naked Threesome palette. तो मैं अपना Morphe का जो blush palette है ये यूज करने वाली हूँ. इसमें से ये वाला शेड. So blush भी हो गया है. To set the face, I'm using Fix Plus from MAC Cosmetics. MAC का उन्होंने setting spray यूज किया है, तो मेरे पास भी है, तो मैं ये वाला यूज करूंगी. Finally, we're at the last step. I'm going to be using the Cover FX glitter drops in the shade Nova to add some glow back to the skin. I definitely recommend applying this with a brush rather than straight from the dropper. तो मेरे पास है लिक्विड हाइलाइटर मिस क्लेयर का. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized
by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया है। मैंने बस इस लुक के साथ ये वाला नेक पीस ऐड किया है ताकि इसे थोड़ा और ग्लैमरस बना पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।